Assalamu alaikum. Open the book of SST Lesson 4, Topic Exploration. In this topic, we discuss different personality who explore the new places. This topic is not in this book, so watch the video carefully. First, we start reading from page number 27. From here, why do we explore? Humans have always been curious about the world around them. Some early travelers simply wanted to find out more about the world. Other explorers went in search of wealth. They looked for the land, minerals, oil fields, spices, and other resources. Turn the page. In human history, the most important period of exploration is known as the Age of Discovery. The period covers the 15th, 16th, and early 17th centuries. During this period, European ships explored the world, finding places previously unknown to them. They visited the Americas, Asia, Oceania, and Africa and established new trading routes. Of course, there were already well established land based trade routes across Europe, Asia, and Africa that explorers from all these continents had carved out long before the age of discovery. The use of ocean based trade routes quickly spread worldwide. After centuries of looking at space through telescopes, humans finally began to explore it in the middle of the 20th century. Scientists have been successful in sending man to the moon. The success of man has not ended here. Space exploration continues with the search for useful resources and for other planets that sustain or could sustain life on them. एक्सप्लोरेशन किसी भी न्यू चीज़ को डिस्कवर करना है और इन स्पेशली आफ्टर द 12th सेंचुरी बहुत सी चीज़ों में इन्वेंशंस हुई, बहुत सी न्यू प्लेसेस जो है उनको सर्च किया गया, उनको डिस्कवर किया गया. सबसे पहले तो जो रूट था, ट्रेडिंग रूट जो बाय रोड था, वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका का डिस्कवर हुआ, जिसके थ्रू लोग ऊँटों पे एज अ कबीलों काफ़िलों की सूरत में मूव करते सामान को एक जगह से दूसरी जगह. फिर उसके बाद आफ्टर दैट फिर बाय सी जो रूट, द ओशन बेस्ड जो रूट था, समंदर के थ्रू, सी के थ्रू जो रूट डिस्कवर हुए, वो दुनिया में बहुत आसानी से जो है वो पॉपुलर हुए, क्योंकि वो बहुत सेफ थे. वो ज़रा सेफ भी थे और ज़रा लेस टाइम कंज्यूमिंग थे एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रेड रूट से. सो बहुत सी डिस्कवरी हुई, स्पेशली 15th, 16th एंड 17th सेंचुरी को. इन 3 सेंचुरीज को एज ऑफ डिस्कवरी का भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेशली उसमें ओशन गोइंग डिस्कवरीज बहुत हुई थी. तो बिकॉज ऑफ 15th, 16th and early 17th century considered is the age of discovery. Now we study about some famous explorers and navigators. Explorers means discover unfamiliar area, and navigator means a person who explore by sea and air. वो इंसान जो हवा में और या समंदर में सफ़र करे, जिससे पता हो कि समंदर में या हवा में किस तरह सफ़र किया जाता है, बेसिकली उसको नेविगेटर कहते हैं. नाउ फर्स्ट पर्सनालिटी इब्ने बतूता. मोहम्मद इब्ने बतूता फर्स्ट
You should underline all the lines which I mark with the green marker. Clear? Muhammad ibn Battuta was a Moroccan scholar and a traveler. He is known as the greatest traveler of pre-modern times. Ibn Battuta was born in 1304 in Tangier. He was from a family that produced several judges, but Ibn Battuta wanted to travel and to study religion. He began his travels at the age of 21 by first going to Mecca, Saudi Arabia for Hajj. Next, he went to Damascus in Syria, then to Egypt via Tunis and Tripoli. Having developed a passion for traveling, he decided to see as many places on earth as possible. From Egypt, he went to Turkey, Iraq, Iran, Oman, and Palestine. He traveled over difficult routes and finally, after crossing Afghanistan and the Hindu Kush mountain range, he arrived in India. Ibn Battuta stayed in India for a few of years. He was then ordered by the Sultan Muhammad bin Tughlaq to go to China. His journey met with disaster as bandits attacked his convoy. In a part in southern India, the locals destroyed his ship. Ibn Battuta was afraid that the Sultan would be angry. He did not stay in India or go to China but went instead to the Maldives. Beside his travels, he became famous for his knowledge of the judiciary. He earned respect at various courts because of his scholarly status. When he settled in the Maldives, he worked as a judge and married a woman from the ruling family. He also managed to get to China before returning Morocco in 1353. Once home, he wrote a book about his travel, Rihla the Travels. Ibn Battuta spent nearly 30 years traveling almost 75,000 miles, mostly by sea, to 40 nations. He very often put himself in a great danger. He died in 1368 or 69 and was buried in Tangier. Ibn Battuta was a स्कॉलर एंड अ ट्रैवलर। इब्न बतूता एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहाँ पर जजेस मतलब ज़्यादा थे, यानी वो काजी वहाँ पे ज़्यादा थे उनके फैमिली मेम्बर। लेकिन इब्न बतूता को दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो ट्रैवलिंग को अपना वो बनाया। 1304 में वो तंगीरा, मोरक्को की सिटी है तंगीरा, वहाँ पे पैदा हुए। फिर वो ट्रैवलिंग उन्होंने स्टार्ट की एट द एज ऑफ 21। उन्होंने 21 ईयर में फ़र्स्ट ट्रैवलिंग की टू मक्का, सऊदी अरेबिया फॉर हज, यानी वो पहली दफ़ा हज करने जब गए तो वो 21 साल के थे और उन्होंने वाई रेड सी के थ्रू उन्होंने ट्रैवलिंग की। फिर उसके बाद उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवलिंग करना शुरू की और फिर जब वो चाइना के थ्रू जब वो इंडिया में दाखिल हुए थ्रू अफ़गानिस्तान टू हिंदू कश, जब वो एंटर हुए इंडिया में, तब इंडिया सब कॉन्टिनेंट था। तो वहाँ के उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें चाइना का जाने को कहा, तो जब वो मोहम्मद बिन तुगलक का सामान लेकर चाइना थ्रू सी जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बैंडिट्स यानी बहरी कज़्ज़ाब, जो बहरी डाकू है, वो उन्होंने अटैक किया उनकी शिप्स पे। और इस तरह उन्होंने वो चाइना तो नहीं गए, लेकिन वो मालदीव पे ही उन्होंने स्टे किया। मालदीव में जब वो रहे तो वहाँ के जो कोर्ट था वहाँ पे उन्हें बड़ी रिस्पेक्ट मिली, बिकॉज उनका जुडिशरी जो था वो बहुत स्टेटस बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एज ए जज उन्होंने काम किया। वहाँ ही उनकी एक मालदीव्स की ही रूलिंग फैमिली में उन्होंने शादी की और वहाँ पे फिर 1353 में जब वो वापस उन्होंने जाने का सोचा अपने शहर,
अपने कंट्री, तो पहले वो चाइना गए और फिर उसके बाद वो 1353 में वो वापस मोरक्को गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी बुक रिहेला राइट डाउन की। फिर इब्न बतूता ने तकरीबन पूरे 30 साल उन्होंने ट्रैवलिंग की, 75,000 माइल्स, और 40 नेशंस उन्होंने घूमे। और ऑब्वियसली उस टाइम एरोप्लेन या वो तो था नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाते थे। तो फिर जो डेंजर उन्होंने उन सारी फेस किया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत सी बुक्स राइट डाउन की और बहुत कुछ उन्होंने डिफरेंट कंपैरिजन किया कल्चर्स का, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली 40 नेशंस के डिफरेंट कल्चर्स जो उन्होंने एक दूसरे से शेयर किए। फिर इन 1369 और 1368 में भी, ईयर इज़ नॉट कंफर्म, 6 में उनकी डेथ हुई और वो अपने ही सिटी टंगीरा जहाँ पे वो पैदा हुए उनकी, वो वहाँ ही दफन हुए। Next personality is Vasco de Gama. Vasco de Gama was Portuguese explorer who was born in Sines, Portugal in 1460. Like his father, he also decided to explore the world. He was the first Portuguese and European to sail to India. He traveled via the Cape of Good Hope, which is at the southernmost tip of Africa. His discovery of the sea route enabled the Portuguese to establish a long lasting colony empire in Asia. He reached the Cape Verde Islands and then Santa Helena Bay in South Africa. From there, he went to Mozambique and then to Mombasa, a port in Kenya. After sailing across the Indian Ocean, he reached the trading post of Calcutta. Now it's called Kolkata in South India. Vasco da Gama was given a hero's welcome when he returned to Lisbon. He was the first European to find a sea route to India. By this discovery, Portugal and other European countries became linked to Asia and the Indian subcontinent by sea. His discovery of the sea route was significant and opened the way for an age of global imperialism. He made two more voyages to India. The route he discovered gave Portugal unopposed access to the Indian spice market. Spices and other products available in India were new to Europe. The new trade route greatly benefited the Portuguese economy. While in India, Gama fell ill and died on December 24, 1524 in Cochin. By this time, Cochin was part of Portuguese India, although he was first buried in St. Francis Church in Cochin. His remains were returned to Portugal in 1539. The body of Vasco da Gama was reburied in Vidigoria in a casket decorated with gold and jewels. Okay. Vasco da Gama is the first European. Vasco da Gama basically पुर्तगाल के सिटीज़न थे और वो पुर्तगाल के सिटी साइनस में 1460 में पैदा हुए, क्योंकि उनके फादर भी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो अपने फादर ही की तरह एक ट्रैवलर बने। सबसे पहले जो उन्होंने एक्चुअली यूरोप से एशिया की तरफ आने का जो बाय सी रास्ता डिस्कवर किया था, वो वास्को डे गामा ही ने ही किया था। वास्को डे गामा जो थे, उन्होंने केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप ये जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे है। वहाँ से अपनी बोट में उन्होंने, अपनी शिप में उन्होंने यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हुए वो एशिया की तरफ उन्होंने ट्रैवल किया। फर्स्ट वो वहाँ से केप वर्डी आइलैंड्स, ये अफ्रीका में, देन सेंटा हेलन आइलैंड, ये भी साउथ अफ्रीका की तरफ, उससे होते हुए मोज़ाम्बिकू, मोम्बास पोर्ट इन कीनिया, वहाँ तक गए। फिर वहाँ से उन्होंने इंडियन ओशन की तरफ सफ़र स्टार्ट किया और इसी तरह वो सफ़र करते करते बाय सी
कलिकता मीन्स नाउ इट्स कॉल्ड कोलकाता तक आए। और इस तरह उन्होंने यूरोप साउथ अफ्रीका के टिप से कॉर्नर से स्टार्ट किया हुआ उन्होंने अपना सफ़र कोलकाता इंडिया में ख़त्म किया और उन्होंने ये रास्ता डिस्कवर किया। जब उन्होंने बाय सी इस रास्ते को डिस्कवर किया तो जब व्हेन ही गो बैक तो उनका बहुत ज़बरदस्त जो है वो वेलकम हुआ लिस्बॉन में, बिकॉज उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट। उन्होंने सी रूट जो इंडिया तक डिस्कवर किया और फिर उस डिस्कवर के बाद जो यूरोपियंस थे वो बआसानी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में एशिया और स्पेशली इंडिया सब कॉन्टिनेंट तक आ जाते थे, क्योंकि सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज द फुल ऑफ new things, the spices, other products, and jewelry, clothes. These are different from them. So वो चीज़ें उनके लिए बिल्कुल यूरोपियंस के लिए न्यू थे, क्योंकि इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है वो सब कॉन्टिनेंट्स को नहीं मालूम था। सो उन्होंने इस रॉ मटेरियल यहाँ से लेते और फिर उसको वहाँ ले जाते। तो वास्को डे गामा जब सेकंड टाइम इंडिया में आए वो यहाँ ही उन्होंने अपना स्टे रखा। तो उसके बाद इन दिसंबर 24 1524 में उनकी डेथ हुई कोचिन में। उनको यहाँ ही जो है बरिड किया गया सेंट फ्रांसिस चर्च कोचिन में, लेकिन इन 1539 में जो उनके बाकी लोग थे वो वापस चले गए और उनकी बॉडी को भी वापस वहाँ पे उनके ही पुर्तगाल की सिटी में ही बरिड किया गया अगेन। सो वास्को डे गामा was the first person who discovered the sea route to in Europe to India. So he was a great traveler. The third one, Marco Polo. Our third personality is Marco Polo. Marco Polo was a merchant and explorer and a writer. He was born in Venice, Italy in 1254. His parents were rich merchants. He was the first European who traveled to Asia during the Middle Ages. He spent his childhood without his parent, as his mother had died when he was young and his father traveled a lot. His father Nicola and uncle Matthew Polo, being successful jewel merchants, spent their time traveling abroad. Marco Polo started his journey to Asia in 1271 with his father and uncle. His first journey was to China. He was a merchant like his father and uncle. As an explorer, he traveled a lot. Between 1271 and 1295, for 24 years, he traveled with his family. He lived and journeyed through different countries in Europe and Asia. He traveled to China after crossing many cities, the Gobi Desert, and the Hindu Kush Mountains. The king of China at that time was Kublai Khan, who made Polo his representative. Polo spent 17 years in China, traveling and learning about its culture. China was a rich country at that time, and Marco was impressed with the wealth and prosperity of the Chinese. He returned home, and after 24 years, in 1271, the journey to Venus took him 2 years. He wrote a book, The Travelers of Marco Polo, which describes his journey and experience. He died in 1324. The third personality is Marco Polo. Marco Polo सबसे पहले तो एक मर्चेंट थे, यानी एक ट्रेडर ताजिर थे, लेकिन उसके साथ वो एक राइटर और एक्सप्लोरर भी थे। वो वीनस, इटली के सिटी वीनस में 1254 में पैदा हुए। इनके पेरेंट्स भी रिच मर्चेंट्स थे और सबसे पहले उन्होंने जो सफ़र किया था वो चाइना की तरफ किया था। और और उनकी मदर की जो डेथ थी उनकी जब वो छोटे थे तब हुई, और उनके फादर जो थे अपने और निकोला वो ट्रैवलिंग ही करते रहते। उन्होंने ही अपने फादर और अपने अंकल के साथ ट्रैवलिंग स्टार्ट की और उसके बाद उनकी फ़र्स्ट जर्नी जो थी 1271 में चाइना में गई।
पहले वो चाइना गए, फिर यूरोप और एशिया में भी उन्होंने गया, लेकिन चाइना में उन्होंने अपना स्टे जो है वो 17 ईयर्स किया, क्योंकि कुबलाई खान जो वहाँ के किंग थे वो उन्होंने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, और मार्को जो थे वो चाइना की प्रॉस्पेरिटी से बहुत इम्प्रेस थे। फिर आफ्टर 24 ईयर्स वो 1271 में वापस अपने सिटी आ गए। द जर्नी टू वो वॉइस वीनस टुक हिम 2 ईयर्स, और वापस आने के लिए उन्हें 2 साल लगा। ही रोड अ बुक द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, उन्होंने एक बुक राइट डाउन की, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ही डाइड इन 1324, और उनकी डेथ 1324 में हो गई। The last personality, Neil Armstrong. Neil Armstrong is different from all the explorers discussed in this chapter. While all others had discovered and explored places on Earth, Neil Armstrong had the honor of being the first explorer to go into space and walk on the moon. Armstrong was born on 5 August 1930 in Ohio. Ohio is the USA state. He started working at NASA. NASA stands for National or Aeronautic and Space Administration. You must underline this line because the NASA stands for National Aeronautic and Space Administration. After getting his bachelor degree in aeronautical engineering and his master's degree in aerospace engineering from the University of Southern California. He began his career as a naval aviator, then served as an engineer test pilot and an astronaut. He flew over 200 different types of aircraft. In first flight into space was 1966 when he commanded the Gemini 8 mission and docked 2 vehicles in space. In July 1969, he was the commander of the mission in Apollo 2, which landed on the moon. On board were 3 crew members: Mission Commander Neil Armstrong, Command Pilot Michael Collins, and Pilot Buzz Aldrin. On July 20, 1969, Armstrong became the first man to walk on the surface of the moon. When he took the first step, he said, "One small step for man, one giant leap for mankind." He stayed on the moon for over 21 hours and collected samples. The mission returned to Earth on July 24. Later, he became a professor of aerospace engineering at the University of Cincinnati. Neil Armstrong's journey to the moon was a significant milestone in the quest to develop our knowledge about the universe. He was given various awards for his achievements. 17 countries conferred on him medals, trophies, and awards. He passed away on August 25, 2012. Are there any places left for humans to explore? Large areas underground and in the oceans do have been not explored. There is also a vast universe to explore. Do you think humans will ever explore these places? What will they find? Neil Armstrong, born in Ohio, USA state in 1930. He started work, उन्होंने अपनी जो बैचलर डिग्री की थी वो एरोनॉस्टिकल इंजीनियरिंग उनकी डिग्री थी, और उसके पहले उन्होंने बैचलर्स किया, फिर देन उन्होंने मास्टर्स किया कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट किया नासा में, तो पहले तो वो नेवल एविएटर थे, देन उन्होंने तकरीबन 200 टाइप्स के एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन्स उन्होंने उड़ाए हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 1966 में जब उन्होंने कमांड किया था जेमिनी 8 को, तो वो स्पेस में गए। फिर उसके बाद इन जुलाई 1969 में दूसरे मिशन में जब वो मून पे गए, तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेप, किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान ने जो फर्स्ट टाइम स्टेप मून पे रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फिर वहाँ पे उन्होंने 21 आवर्स स्पेंड किए, सैम्पल्स कलेक्ट किए, और उसके बाद वो 24 जुलाई को वापस आ गए ज़मीन पर।
दिस इज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि वो मून पे गए स्पेस के थ्रू, स्पेसशिप के थ्रू, और वहाँ पे उन्होंने एक नई दुनिया देखी, और यूनिवर्स आने वाले लोगों के लिए, आने वाली मैनकाइंड के लिए उन्होंने एक न्यू टास्क दिया कि हम मून पे अगर जा सकते हैं तो हम यूनिवर्स के और के एरियाज में जा सकते हैं. दीज आर द our four personalities. There are several personalities who invent and discover all the things that we are using in our present day. 11th century से बल्कि मैं 11th और 10th century से जो है वो डिस्कवर करना स्टार्ट हो गया था इन मेडिकल, इन traveling, in different field of life. So okay, this is the reading and explanation of this topic, exploration. Question answers and fill in the blanks in the will be in the next video. Okay, and underline all the lines which I mark with the green one. Important points है, you should learn them, you should remember them, you should understand them. Okay, because it is very important for your CBTs and objective. Okay, okay, now take out your